So guys, I already prepped my skin. Now the first option what I gave to you is, so the option I gave you was which primer I should use. The option was matte या dewy. तो जो 81% लोगों ने matte पे चूज़ करा है, so I'm gonna use a matte primer. So let me see कि मेरे पास कौन सा ऐसा primer है जो matte में हो. So guys, I have these two primer. This one is the Lakme Absolute Blur Perfect Primer, and the other one is from Color Bar. So I'm gonna use this today. Just gonna take a little bit on my fingertip and rub it between my fingers and apply it where I have large pores. This is a very good primer and it's also very affordable. अगर आपने मेरी अंडर बजट वाली मेकअप किट वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखना. सो गाइज, द नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको दिया था वो था फाउंडेशन के लिए, विच फाउंडेशन आई शुड यूज़. तो मैंने ऑप्शन दिए थे मीडियम कवरेज और फुल कवरेज. तो 65% लोगों ने फुल कवरेज चूज़ करा है. सो आई एम गोना यूज़ टुडे अ फुल कवरेज फाउंडेशन विच इज़, let me see, which is this Maybelline Superstay Full Coverage Foundation 24 hour, and I'm in the shade 312 Golden. So start. This is a very thick foundation. So guys, I'm gonna blend my foundation with this PAC Beauty Blender. You can see guys, this foundation is so good. This is a full coverage foundation and you should try this one. So move on to the third. So the next option is for blush. तो मैंने कंसीलर के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं कंसीलर लगा कर आती हूँ. So guys, I'm done with my concealer and eyebrow. So the next option is for blush. सो ब्लश के लिए मैंने ऑप्शन दिया था क्रीम ब्लश और मैट ब्लश. तो 55% लोगों ने क्रीम ब्लश चूज़ किया है. सो आई एम गोना डू टुडे अ क्रीम ब्लश. सो फॉर दैट आई हैव दिस शुगर ब्लश स्टिक एंड दिस इज इन द शेड मॉव मार्वल. लेट मी शो यू द कलर. This is the color. Look how beautiful is this. So let me apply on my cheeks. Now I'm gonna blend this with my fingers. Now I'm gonna blend this with the beauty blender to give it a natural finish. Look how beautiful this looks. So guys, जो cream blush होते हैं वो बहुत natural finish देते हैं. You can see on my face, it looks so natural.
सो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दिया था टू गेट बैक द कलर्स ऑन द फेस. सो उसके लिए ऑप्शन मैंने दिया था कॉन्टोर और ब्रॉन्जर का. तो 64% लोगों ने कॉन्टोर चूज़ किया है. सो आई एम गोना कॉन्टोर टुडे. सो फॉर दैट आई एम गोना बी यूजिंग अगेन फ्रॉम शुगर. This is their face forward contour stick and I am in the shade 01 Fawn first. So I'm gonna apply a little bit. Just that. I'm gonna blend this with the beauty blender. So guys, I'm done with the contour. Let's move on to the next step. So guys, the next step is highlighter. So highlighter के लिए मैंने ऑप्शन दिए थे subtle और going crazy. So guys, 66% लोगों ने subtle चूज़ करा है. So I'm gonna do that. But मैं दिल से चाहती थी कि लोग going crazy चूज़ करें because I like highlighter so much. You are already know that. But it's okay. आज कुछ अलग करके देखते हैं. So for highlighter, I'm gonna use this Maybelline Master Chrome highlighter in the shade Molten Gold. You can see how beautiful this shade. This is perfect for dusky skin girls like me. I will try to use less. Okay, we are done with the highlighter too. Move on to the next step. So guys, now I'm gonna do my eyes. So eyes के लिए मैंने ऑप्शन दिया था कि स्मोकी लुक करूँ या ग्लिटरी लुक करूँ. तो 78% लोगों ने चूज़ करा है स्मोकी लुक. So I'm gonna do that for today's makeup. So let's start. So guys, first I'm gonna apply this shade. This is a dark brown shade and I'm gonna apply this all over my lid. Guys, today I'm gonna do a brown smoky eyes because I don't have the black eyeshadow. So actually मुझे black से ज़्यादा brown ही अच्छा लगता है smoky eyes में. And now I'm gonna take this shade and I'm using the fluffy blending brush. I'm gonna take a little bit, tap the excess always, and I'm gonna blend this brown shade with this transition shade. Now I'm gonna take another palette. This is from Wet n Wild and I'm gonna use this shade with the same brush. So now I'm gonna use this sugar brown kohl. I'm gonna apply this closer to the lash line.
Also, I'm gonna apply this on my waterline. Now I'm gonna take this pencil brush and again I'm gonna take this brown shade and take a little bit on the brush and blend the liner. So guys, we are done with this eye look. Now I'm gonna apply mascara and come back. So guys, I forgot to tell you before, जो मैंने काजल यूज़ किया था वो भी इस चैलेंज का एक पार्ट था, तो मैंने काजल के लिए भी डाला था, तो 81% लोगों ने मुझे बोला था काजल यूज़ करने के लिए, so that's why I use the sugar brown kajal. So guys, the last option of the makeup is lipstick. So lipstick के लिए मैंने options डाले थे nude और bold, तो 77% लोगों ने nude चूज़ करा है. So good choice guys, क्योंकि smoky eyes के साथ nude lips bomb लगते हैं. So I'm gonna use a nude lipstick. So I have two options for that. So the first lipstick is this one is from L'Oreal in the shade Explore. Let me show you the shade. This is the shade, and the second one is this one. So I think I'm gonna use this one from L'Oreal. So I'm done with the makeup. You can see how beautiful this looks. All credit goes to you because आपने अगर अच्छे ऑप्शन चूज़ नहीं किए होते तो ये ऐसा नहीं turned out होता. So guys, comment down below आपको ये मेकअप कैसा लगा. And if you want more video like this कि मैं Instagram पे आपसे पूछूं कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, so comment down please. And also if you like this video, don't forget to like this video. So guys, जो last option था वो hairs के लिए था. Hairs के लिए option मैंने दिया था, where is my phone? So last option मैंने hairs के लिए ये दिया था कि आपको straight hair चाहिए या फिर curly चाहिए. तो 59% लोगों ने curls पे choose करा था. So I'm gonna do that. But guys, I'm not able to do that on camera because I don't have any plug near me. So guys, मैं curls off camera करके आपसे मिलती हूँ. So guys, I'm back with my curls. You can see. So guys, I'm done with today's video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also comment down below what you like in this video or what you want to see in my next video. And also if you want to connect more with me, follow me on my Instagram. My Instagram handle is in the description box below. Till then, bye, tada, take care.